मध्य प्रदेश के इंदौर से मेघालय के सोहरा चेरापूंजी हनीमून पर आए नवविवाहित जोड़े की रहस्यमय गुमशुदगी के बाद से खोज अभियान तेज कर दिया गया है। लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं इस घटना ने एक और विवाद के जन्म दे दिया जब राष्ट्रीय दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा गुरुवार को इस घटना को लेकर घटना वाली स्थान सोहरा के एक वीडियो के शीर्षक में अपराधप्रवण पहाड़ियां वाक्यांश के साथ कवरेज किए जाने के बाद मेघालय में आक्रोश भड़क गया। मेघालय महिला कांग्रेस ने इस आरोप की निंदा की और इसे एक गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग करार दिया। वही पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदोह ने घोषणा की, सोहरा पूरी तरह सुरक्षित है। आक्रोश के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने शीर्षक संपादित किया और विवादास्पद शब्द हटा दिया, परंतु इस तरह के गैर जिम्मेदार समाचारों से मेघालय के पर्यटन उद्योग को प्रभावित करना किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। इसी संदर्भ में मेघालय टूरिज्म डेवलपमेंट फोरम (MTDF) द्वारा एक प्रेस ब्रीफिंग आयोजित कर राष्ट्रीय मीडिया घरानों से यह अपील की गई कि इस तरह की दुर्घटना कहीं भी कभी भी हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि उस पर्यटन स्थल को ही आपराधिक स्थल घोषित कर उसे बदनाम कर दिया जाए। जबकि मेघालय देश के सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थलों में से एक है और यहाँ की ज्यादातर अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही निर्भर है, जिसके कारण यहाँ के लोग पर्यटकों को स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ते। बावजूद इसके किसी राष्ट्रीय मीडिया में इस तरह की खबरें छपना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे केवल मेघालय की ही पर्यटन उद्योग प्रभावित नहीं होगा बल्कि पूरे पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन उद्योग पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। And we have really want to express our unhappiness at the article that came out yesterday in one of the national publications where our hills was branded as crime prone. Now we find this to be an extremely wrong statement to make, an extremely misleading statement to make, because as we all know that Meghalaya tourism is growing tremendously over the last many years. In fact, the growth story in the last 4 to 5 years has been tremendous, and with this sort of momentum, we see Meghalaya becoming a major tourism destination in the country. Now, this sort of development is good, especially in the context of how our great nation is growing. Today, India is the third largest economy in the world. The northeast of India is a region where a lot of developmental focused activities are happening. The development of the northeast will open up the gateway for India to also partake and collaborate with the ASEAN growth story. And therefore, the growth of the northeastern region is extremely important for the growth of the country. And in this regard, as our different northeastern states are growing, as Meghalaya is growing in the context of tourism, it is very unfortunate that a misleading article, a very irresponsible statement coming out of a very respected national publication or organization to unfortunately brand the hills as crime prone, which is totally wrong, as we all know. So this is why we have essentially expressed a request on behalf of the people of Meghalaya, especially the people who make a livelihood out of tourism, that the publication kindly come up with a rejoinder, kindly come up with a corrigendum, because the statements that are made are disseminated to millions and millions of people across the country who are yet to understand Meghalaya and the northeastern region, and therefore any negative messaging will deeply hamper the brand equity of the state as well as of the region. And at this point of time, we take this opportunity to request the national media to kindly work in a responsible manner
to kindly cover the region in a responsible manner, not only sensationalize news which is negative, or worse so, not to sensationalize news that is untrue, but also bring out the right stories. We are ready to accept mistakes if they are made. We are always there as a community, as citizens, as society, as states and regions to work towards corrective measures, but to also work with this region in helping the right news, the correct news go out to other parts of the country for the overall betterment of India.